Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Great. Thank you. Thank you for the confirmation, guys. We'll start the session in next 2 minutes. So the sessions are free and Madhur Mundada sir will be taking today's session. I hope you all are excited. हमारा लास्ट कॉमोडिटी सेशन जो था कल 6 बजे वो प्रॉफिटेबल था. लेट्स होप कि हमारी प्रॉफिट स्ट्रीक कंटिन्यू हो. I can see more people आज इतना साइडवेज क्यों है मार्केट. गाइस ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारे रिसर्च एक्सपर्ट ही देंगे. ऑल स्टॉक ऑप्शंस आर मेल्टेड. Feel free to drop your queries in the chat. We'll take it up one by one. Shomji, I'm doing good. Thanks for asking. I'm just checking in with our expert. You are speaking on a mute. Thank you for letting me know. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. Welcome to the free live expiry session with our expert, Mr. Madhur Mundada. Feel free to drop your queries in chat. We'll start with the Sensex overview, strikes on radar, and if we have a trade, we'll initiate the trade and then we'll talk more. If not, we'll give you a quick overview, then strikes on radar, then we'll talk about some BTSTs, and then we'll move towards the trade. I can see some questions are still coming in. We'll take this up as soon as possible. Madhu sir, we are all set. You can turn on your camera and then we are good to go. We could hear you clearly. Your screen is visible. You are visible and you were clearly audible. So you can start the session, sir. Yeah, sure. So very good everyone. Madhu sir, we can't hear you actually. Your voice is cracking. Like there's some internet issue. If you can leave and join. Yeah, you are clearly audible now, sir. So feels like it's complete option writers day from last 2 days because both the call and the puts premium are decaying, which means there's not enough momentum on either side for the buyers because it's very difficult to find a trade in a such kind of market for the option buyer. Right, since morning we are tracking both call and put, but not able to find a single trade which gives a momentum of 30-40 points in option in a call or put. Right, though the view is slightly negative because if I talk about the Sensex, uh,
The Sensex is trading below its monthly VWAP as well as the weekly VWAP, right? So now let's have a view on the Nifty first. So this is the Nifty intraday. Now see the 1 day chart on the Nifty. So this is the Nifty daily chart. Nifty yesterday opened on a negative note, almost over 180 point gap down yesterday, and then from there onwards, index is trading in a range. अगर मैं पूरे रेंज की बात करूं तो निफ्टी ने 22,800 बहुत अच्छे से होल्ड करते हुए नजर आ रहा था टिल लास्ट वीक, बट मंडे ने वो लेवल ब्रीच किया, 22,800 निफ्टी में ब्रीच किया है। पूरा 8 दिन का जो रेंज था निफ्टी का वो ब्रीच हुआ है, और वहां से आप जो 22,800 पहले सपोर्ट का काम करता था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पूरे एक 8 दिन का ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने मिला है। एंड सिंस एस्टरडे, अगर मैं कल की हाई की बात करूं तो 22,668 का हाई बनाया था, और एक रेंज में निफ्टी है। अगर लुक एट द आवरली चार्ट ऑफ द निफ्टी, सिंस एस्टरडे निफ्टी रेंज अगर मैं बात करूं तो नीचे में 520 का रेंज है, और ऊपर में अगर मैं बात करूं तो 622 का रेंज है। तो कंप्लीट 100 पॉइंट का रेंज में निफ्टी काम करते नजर आ रहा है फ्रॉम लास्ट 2 days, right? Again, the view is slightly negative. So till Nifty holds below 22,800 zone, we can see that Nifty can touch towards 22,400 and then 22,222 level. So Nifty के अगर मैं levels की बात करूँ तो 22,800 is the immediate hurdle for the Nifty, then 23,000, and the supports are seen at 22,400 and then 22,222. So Nifty यहाँ पे हमें लग रहा है कि अगर जब तक 22,800 के नीचे होल्ड हो रहा है, शायद निफ्टी 22,400 एक बार का टच कर सकता है, और 22,400 के नीचे 22,222 का लेवल निफ्टी को नजर आ रहा है। So this is the update on the Nifty. Now looking at the Bank Nifty, Bank Nifty की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कंपेयर टू निफ्टी से कम गिरा। कल अगर कैंडल देखे बैंक निफ्टी की तो नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग हमने बाइंग देखने मिली है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज द मोमेंटम इज बेसिक ऑन द अपर साइड, राइट? इवन टुडेज हाइज अराउंड 48,862, वहां से एक थोड़ा सा फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम देखने मिला है, बट बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। लुक एट द आवरली चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी, राइट? सिंस मॉर्निंग अगर मैं बात करूं तो नीचे में 48,500 का लेवल है, और ऊपर में 48,700। तो 50,000 के इंडेक्स में पूरे दिन का रेंज बैंक निफ्टी का 200-250 पॉइंट का रेंज है। सो यू कैन सी के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रेड फॉर द ऑप्शन बायर, right? So Bank Nifty immediate support is seen at 48,500 and then 48,250 level, but प्रॉब्लम है कि ऊपर में भी बाइंग सेलिंग देखने मिल रही है हमें। So 49,000 is the immediate hurdle for the Bank Nifty. So Bank Nifty till it holds below 49,000, Bank Nifty can go towards 48,250 level. Only good part from the Bank Nifty is that some heavyweight counters are holding well, like FDFC Bank, ICICI Bank, and the Axis Bank. These private banks are holding well, and that is the reason Bank Nifty is holding on upper side. At least Nifty से compare करो तो उतना गिरा नहीं है Bank Nifty, right? So now talking about the Sensex. So since morning, as I said, कुछ खास momentum है नहीं even Sensex में, right? As of now मैं Sensex की बात करूँ तो 74,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है, and I'm tracking the call and the put since morning. 74,700 का जो जोड़ी है कॉल और पुट का, इसका कंबाइंड प्रीमियम 1230 के आसपास, एक 100-110 के आसपास था। नाउ द कंबाइंड प्रीमियम अगर मैं बात करूं तो इट्स ओनली एन अराउंड 655 लेवल। सो सी दोनों तरफ में हमें प्रीमियम डिके देखने मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बाय का ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल है। स्टिल अगर कोई मोमेंटम यहाँ पे आता है नजर में तो विल गो फॉर द ट्रेड, बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड सेटअप है नहीं। नाउ द लेवल वाइज में सेंसेक्स की पोजिशनली बात करूं तो सेंसेक्स एट द सपोर्ट अराउंड 74,000 लेवल, while the resistance is seen at 75,000. So till the Sensex is trading below 75,000, Sensex can go towards 74,000, right? As of now 74,700 के आसपास Sensex trade हो रहा है, but till it holds below 75,000, the view is very clear. View is a bearish, and it can touch towards 74,000 level. For the expiry purpose for next 1 hour, the support is seen at 74,500, while the hurdle is around 74,800 zone. But as of now, as I said, कोई setup नहीं है यहाँ पर, because the momentum we require for the option buy is clearly missing in the market, and that too from the last 2 days. मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ. Now looking at the India VIX as well,
विक्स देख रहे हैं क्या हो रहा है। विक्स काफी गिरावट देखने मिली है हमें। कल विक्स में मॉर्निंग आवर्स में हमने तेजी देखने मिली थी। इट मेड अ हाई अराउंड 15.58, बट वहां से जो विक्स में गिरावट देखने मिली है, एंड दैट इज आल्सो द रीजन जो मार्केट में मोमेंटम था वो बहुत मिसिंग है। बिकॉज आज भी मैं बात करूँ तो विक्स ऑलमोस्ट 5% विक्स डाउन है। तो प्रीमियम्स काफी मेल्ट हो चुके हैं और जो मोमेंटम होना चाहिए था वो मोमेंटम नहीं है मार्केट में। एग्जैक्टली राइट। सो अगेन वी हैव द वन मोर एक्सपायर दैट्स बैंकेक्स एज वेल. So when Bankex is forming a doji sort of candle from last 2 days, and again look at the hourly chart. So clearly the sideways momentum, जो मॉर्निंग का जो कैंडल था अराउंड 10-15 वाला, ये इसी के अंडर बैंक एक्स ट्रेड हो रहा है। नीचे में 55,400 का लेवल है, और ऊपर में अगर मैं बात करूं तो 55,523। सो 50-55 का इंडेक्स, और ऑलमोस्ट जो रेंज है इंडेक्स की फ्रॉम लास्ट 3 to 4 hours is almost a 150 point का रेंज है। So the momentum is clearly missing in the Bankex as well, right? So immediate for an expiry purpose, the support is seen at 45,400 level, while the hurdles are seen at the 55,530 level. So this is a quick update on the index, right? So Anuj, now we can go for the queries. Sure, sir. I'll just scroll up. Sir, can I buy Bharti Airtel for a week? Okay. सो एक बार यहाँ पे लग रहा है कि भारतीय में शायद बॉटम होना चाहिए। 4-5 दिन के गिरावट के बाद आज काफी अच्छी तेजी देखने मिली है, एंड फॉर्मिंग काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग ऑन द डेली चार्ट। सो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो अराउंड 1597, और हमें लग रहा है कि ऊपर में शायद एक 1690 के आसपास आना चाहिए भारतीय। So Volta's 1380 call, March expiry at 21. First we'll look at the chart of the Voltas, and एक काफी गिरावट के बाद the stock is holding well। 3-4 दिन से साइडवेज मोमेंटम है और नीचे सपोर्ट से बाइंग देखने मिली है। ओवरऑल अगर तो बिगिन ट्रेड की बात करूँ तो अभी भी वीकनेस है चार्ट में, बट द गुड पार्ट के नीचे के लेवल से यहाँ पे थोड़ा होल्ड होते नजर आ रहा है। सो अगर मास का सीरीज का आपने कॉल बाय किया है तो कीप वन थिंग इन माइंड। अगर आप स्पॉट का चार्ट देख रहे हो तो 1180 का वोल्टास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो इट्स बेटर टू एग्जिट, बट आपने कॉल बाय किया तो इसमें डीके का भी इशू आता रहेगा। तो जैसे अगर आपको मोमेंटम में पैसे मिलते हैं तो बेटर आप उसे बुक करते चले। Sir, REC holding at 80. आरईसी लिमिटेड Yes, bought 435 at 80. अच्छा कॉल बाय किया है। Yes. Okay, so the structure is very weak and it's better to exit the call, because stock can head towards 380, 370 level. Looking at the daily chart forming a lower top, lower bottom, and even on the weekly frame, structure is very weak. So better आप call exit कर दे, और आपको यहाँ पे अगर लग रहा है तो go with the strategy, because यहाँ पे आपका loss थोड़ा strategy में कम हो सकता है। So Sun TV for 1 week. Before that, we'll see the Nifty media chart, right? You can see the better idea. Listen to Nifty media chart and the daily chart of Nifty media. Look at the trend. It's completely in a downtrend. So better कि आप जो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है उसके स्टॉक्स खरीदा नहीं खरीदे, बिकॉज वहां पे मोमेंटम आने के बहुत टाइम लगेगा। नाउ लुक एट द सन टीवी चार्ट। लुक एट द चार्ट, काफी वीक है। इट मेड हाई अराउंड 920 इन लास्ट अगस्त, एंड इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिरावट वहां देखने मिली है हमें, नियरली 50%। सो स्ट्रक्चर काफी वीक है। तो आज थोड़ा सा इसमें बाइंग देखने मिली है, बट स्टिल जो स्ट्रक्चर है अभी चेंज नहीं हुआ है।
तो बेटर मेरे हिसाब से एग्जिट करना, मतलब नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। So Kalyan Jewellers was short term. Can it cross 600? तो कल्याण का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट मंथ में काफी हमने इसमें सेलिंग देखने मिली है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 420 का लो बनाया था, वहां से थोड़ा बाइंग देखने मिला, वहां से फिर से सेलिंग देखने मिली है। तो आपको बाय करना है तो ट्राई टू बाय अराउंड 450 लेवल, वहां पे आप बाय करें 450 के आसपास, कीपिंग इन स्टॉप लॉस ऑफ 400 इन अ माइंड। एंड ऊपर में अगर 450 होल्ड होता है तो स्लो एंड स्टेडी ये आप 500 550 के आसपास आएगा। बट टू क्रॉस 600 उसको टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ये फिर से हर्डल ले रहा है अराउंड 600 के आसपास ही, तो उसके लिए थोड़ा शायद मे भी टाइम लगेगा। So Zomato. So one of the favorite counter, almost in every session we get the query on this, and in every session मैं वही बोलता हूँ कि Zomato 200 210 is a strong support zone for a Zomato, and look at हर बार वहीं पे आता है, वहीं से एक strong buying देखने मिलती है हमें। On 22nd Jan it made a low of 203, again एक काफी buying देखने मिली। On 12th Feb again a low of 206, again एक buying, तो अच्छा करेक्शन देखने मिला जोमेटो में। अगर वापस फिर से 210 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप बाय करें फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। शायद ऊपर में आपको काफी अच्छे टारगेट इसमें देखने मिलेंगे। Sir, Coal India bought 10 shares at 528. Should I average or exit or hold? बॉट है 528. ओके, सो काफी ऊपर में आपने बाइंग की है। नाउ लुक एट द सेक्टर सीपीएसई, यू विल गेट द मोर आइडिया, राइट? दिस इज द निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स, exact the replica of the coal india chart, right? It's a sectoral index. तो यहाँ पे एक इसका टॉप बना था इन लास्ट जुलाई, और वहां से कंटिन्यू गिरावट देखने मिल रही है। सो अभी भी यहाँ पे कोई साइन नहीं है रिवर्सल के, राइट? लास्ट वीक थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिला था, बट अगेन इन दिस वीक की मैं बात करूँ तो अगेन इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 2%। सो यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। नाउ लुक एट कोल इंडिया चार्ट, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप होल्ड कर सकते हो, राइट? आपने ट्रेडिंग के लिए लिया रहेगा तो काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला है स्टॉक में। 320 30 330 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है कोल इंडिया में तो फिर आप लिया तो आप कर सकते हो। Sir, again, your voice is cracking actually. If you can check it out once. We're having some issue with the internet. Sir, Can you check on now? Yeah, better. NMDC was given as a BTST. So BTST was given yesterday, right? Yeah. Okay. So यहाँ पर थोड़ा आज पेन देखने मिला है, राइट? मेटल में लुक एट निफ्टी मेटल, आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर खड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, आज निफ्टी मेटल में पेन देखने मिला है। Even the Nifty metal is down by 1.3%. So that's why the NMDC is also down by nearly 1.6%. So अगर इसका stop loss hit हुआ रहेगा तो better आप इसे exit करते चले, because it was a BTST trade. So उसे आप exit करते चले, but अगर किसी को hold करना है तो for a positional purpose, so 60 is the stop loss for that. 60 के नीचे अगर आता है तो better आप इसे exit कर लें। Sir, Indian hotels. Before that, again, जब हमने सेशन चालू किया था, सेंसेक्स वाज ट्रेडिंग अराउंड 74,690, और अभी भी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो 680 85 के आसपास ही है। सो देयर इज नथिंग मूवमेंट इन सेंसेक्स। सो यहाँ पे कोई ट्रेड फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? 74,700 का जो कॉल पुट था, 24 एंड 14 नाउ 55 के आसपास था जब हमने सेशन चालू किया था। इसका कंबाइंड प्रीमियम, now the combined premium is around 35 38 लेवल। सो वहां पे उसमें फिर से डिके देखने मिला दोनों कॉल पुट में।
सो बेटर है कोई ट्रेड ना ले, राइट? यस अनुज, द इंडियन होटल, राइट? Yes, sir. ओके, इंडेक्स की गिरावट के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो करा हुआ है यहाँ पे इंडेक्स देखने नहीं मिला है। देखने मिले बट सेक्टर वाइज काफी अच्छा है फिर भी। तो ट्राई टू बाय अराउंड 7 and 10 लेवल, वहां पर आप बाय कर सकते हो इसे, टारगेट टुवर्ड्स द लेवल। Sir, your view on Geo Financials. issue today. So जियोफिन की मैं बात करूं तो on a weekly chart, stock is in a downtrend, and since on a monthly chart as well, from last almost 4 months is forming a lower top lower bottom on a monthly frame, and जहां पर इसका लिस्ट हुआ था स्टॉक, इट वाज लिस्टेड इन अगस्त 23, एंड तब का जो लो था मैं बात करूं तो 220 के आसपास लो है उसका, उसी के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है जियो अभी, तो किसी को बाय करना तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, राइट? एंड ऊपर में स्लो एंड स्टेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 300 लेवल। For CG Power. सीजी पावर अगेन quite a good recovery for the last 2 week, and its support is around 500, वहां पे काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए। तो किसी को बाय सपोर्ट 550 530 के आसपास से बाय करो, स्लो एंड स्टेडी स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 640 650 लेवल। Sir, any BTSC trade? एज ऑफ नाउ अनुज कुछ खास मोमेंटम नहीं है, राइट? कुछ स्टॉक अगर नजर में आता है तो विल डेफिनेटली अपडेट। Sir, your view on UPL. दिस इज वन सेक्टर, दैट इज द केमिकल सेक्टर, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जबकि निफ्टी नीचे आ रहा है। बट अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो केमिकल सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। सो लुक एट द चार्ट ऑफ द यूपीएल ट्रेडिंग नियर 52 वीक की हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ऑन अ मंथली फ्रेम एज वेल काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम का हमें ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर। सो यूपीएल किसी को बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, स्टॉक कैन हेड टूवर्ड्स 690 700 इन कमिंग सेशन, राइट? एंड अगर मैं सीजनलिटी की बात करूं, इन मार्च मंथ 10 out of 7 टाइम यूपीएल ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर आप यूपीएल में नजर रख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। Sir, Suzlon. So before that, Anuj, one stock on the radar for the BTS, that is the RVNL, right? So stock is trading at the 363 as of now, with a stop loss of 356। ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 375 के रेस में टारगेट आना चाहिए, with a stop loss of 356 or upside target towards 375। Sir, your view on Ircon. 43% loss में हूँ. So looks like you bought a Yurcon जब इसका peak हुआ था, right? Look at the weekly chart, right? Again जो जुलाई में टॉप बना था द रेल पीएसयूज का, whether it's a Ircon, RVNL,
IRFC, राइट. सो वहां पे JWL, वहां पे एक टॉप बना था और वहां से कंटिन्यू स्टॉक इतना डाउन ट्रेंड सपोर्ट के आसपास है. सो जो लास्ट वीक का लो था 145 इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है ऑन वीकली बेसिस तो बेटर आप इसे एग्जिट करें. So your view on HAL? अगेन डिफेंस सेक्टर में काफी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है. एंड चार्ट इज क्वाइट अ वीक एंड इट कैन हेड टूवर्ड्स 3000 लेवल. यहाँ से हमें लग रहा है कि और इसमें गिरावट हो सकती है. तो किसी को बाय करना है तो सपोर्ट जहां पर है 3000 के आसपास वहीं पे बाय करे. एट द CMP यहाँ पे आप बाय की सलाह नहीं रहेगी. I guess we'll take one or two more queries. Sir, your view on Lupin? So Lupin structure is quite weak because forming a lower top lower bottom on a daily frame and support एक जो important था वो भी breach किया है. Trading below its 200 EMA as well on a daily frame. So stock can hit towards 1850 level. तो that is its strong support zone. वहां पर आप buy कर सकते हो. But as of now यहाँ पे structure weak है तो better CMP पे कोई buy की सलाह नहीं रहेगी. Sir, last question would be Nalco. So as I said, till last week, Nifty Metal में काफी अच्छा momentum था, but in this week, Nifty Metal जो strong sector था, वहीं पे हमने वहीं पे profit booking देखने मिली है. See the Nalco chart, last week it was up by 11%, nearly 11%, but in this week जो पूरा last week का gain था वो पूरा wipe up हो चुका है. Stock is down by nearly 10% in this week. So यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है. बट अगेन द सपोर्ट की मैं बात करूं तो 175 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द नैल्को. वहां पर आप बाय कर सकते हो फॉर अपसाइड टारगेट टुवर्ड्स 190. So guys, that will be all for our today's session. We have shared one BTST market sizes tha, so we don't have any Sensex trade. We did try to take all the queries possible, but अगर अभी queries answer नहीं हुई हैं तो feel free to drop them on stock. We'll be happy to take it. Thank you everyone. Thank you Madhur sir.